our herd is an A2A2 herd. Yeah, we're really happy Rivergen considering taking our cattle. We want them to go to a really good place. They are very good cattle and we don't want to see them go, but you know, these are the best of our cattle. We would love to keep all of them. But बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। मुदस्सिर मलिक आपको रिवरजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम कर रहे हैं। फार्मर्स, हमारी कैटल प्रोक्योरमेंट स्टार्ट है। कैटल की हम परचेजिंग के लिए हमने अर्ली अपना वर्क स्टार्ट किया हुआ, डिफरेंट फार्म्स के ऊपर जा रहे हैं। आज हमारा विजिट था सैंड्रा एंड ग्रेग पेयर्स फार्म के ऊपर। इनकी ये कुछ ब्यूटीफुल हैफर्स आप देख रहे हैं हमारे पीछे। हम इनमें से कुछ सिलेक्शन करने के लिए ऑलरेडी इधर आ चुके हुए हैं। इसमें से हम कुछ शॉर्ट लिस्ट हमने की हुई हैं, डाटा हमारे पास है। रियली ब्यूटीफुल कैटल्स, सारी AI ब्रेड हैफर्स हैं। सैंड्रा और इनके हस्बैंड जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे हैं। इनके पास हम इनसे भी कुछ बातचीत भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि हाउ मेनी हेड्स दे हैव, कितना इनके पास अभी एनिमल है। और हम इस वक्त इनके साथ, चूँकि हमारी परचेजिंग जो है वो ऑलरेडी अभी आपको पता है कि मई चल रहा है, तो हमारी शिपमेंट जो है वो इंशाल्लाह नवंबर में डॉक करने जा रही है। तो हम इनसे ये कैटल जितनी हमारी इधर से शॉर्ट लिस्ट होगी वो हम अपनी एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी पे ले जाएंगे, जिधर हम जाके मज़ीद इनको इनकी फीड बेहतर करके तो फिर इनको अपने AI प्रोग्राम पे ले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सैंड्रा फॉर गिविंग अस टाइम टुडे एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट द heifers on priority, as we are a little bit ahead of from the other market to get our options wider. And thank you very much for preparing all the data for us. So first tell us a little bit about the herd you have here and how many heads are you running and from how long you've been in the business in the dairy industry. yeah, my husband and I bought our farm in 2002, so about 23 years ago now. We milk 340 cows on a farm which is about 5 k's from here, about southeast of here. These cattle are all AI bred cattle from our milking herd, which are all a very good genetically bred herd. The average production's around 640 kilos of solids, about 8,500 litres of milk per cow per year. The genetics that we've been using is also A2A2 genetics, which we've been using for about 18 years now. So these are all really good cattle. This is on an adjustment block of land that we use just for rearing our young stock, so hasn't had any milking cows on here. Before we came here it had beef stock on it, so yeah, it's very good production land too for running young stock. It generally grows good grass. And that's good. So Sandra, what's the total number of herd you have? Like, what is the strength of the herd at Sandra and Greg Pierce Dairy? 340 we milk, which is, and we calve twice a year, yeah. So we'll do about 30% of our calving in the autumn months from March through to the end of April. And then we do a spring calving from July through till the end of August. So farmer इनके पास 340 के round about herd जो है इस वक्त currently milking पे ऊपर है. The average percentage of fat for that production figures I gave you is about 4.1% fat throughout the whole year and about 3.5% protein. So इनका जो fat average आ रहा है वो round about 4% है, 4.1%, जो कि really matter good. और उसमें जो इनके पास average production है grazing के ऊपर वो about 8500 लीटर 8500 लीटर ये ग्रेजिंग के ऊपर कर रहे हैं। सो और ये A2A2 बुल जो है वो यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स। सो दैट मीन्स कैटल इज़ प्रीटी मच A2A2 जितनी ये कैटल इधर खड़ी है। इसमें जो इनके पास जितना डाटा अभी है हमारे पास वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। रियली हाई BPI कैटल जो इन्होंने सायर और डैम्स इनका वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है। दिस कैटल इज़ गोइंग फॉर द जीनोमिक टेस्टिंग एज वेल वेरी सून। सारा इनका हर्ड रजिस्टर्ड है। ये वाली जो अभी एनिमल्स हमारे पास खड़े हैं इनमें से हम वो पिक करेंगे जब जीनोमिक हमारे पास रिज़ल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह इन अबाउट 3 to 4 वीक्स ये कमिंग अप।
तो उसमें हम अपना फ़िल्टर आउट कर लेंगे। जो टॉप रेंज कैटल है अबव 150 BPI, वो सारी हम इधर से सिलेक्ट करने जा रहे हैं और ये ऑप्शन हमें सैंड्रा ने दी है। So Sandra, thank you very much for giving us this priority that we can choose our own selected cattle from the herd, and we are really excited about it. Just tell us a bit, like we can see a little bit of beef cattle as well, like crossed. So are you doing that beef on dairy programs as well at your farm? Yes, we do selectively breed some of our cattle to beef straws or beef genetics, purely because the bottom percentage of cattle, we don't want to join those to Frisian bulls. So we choose beef straws just so that we're eliminating any heifers that come into the herd that are from the lower end of our production, the lower production end of our herd. So that's why you see these in here, but they just get sold off for beef. You don't milk them. Yeah. They get sold off for beef. सो फार्मर जिस तरह की सैंड्रा का आपको बता रही है कि ये जो इनका लोअर एंड हर्ड होता है, जो जिनका जीनोमिक इतना अच्छा नहीं होता या फिर वो लो साइड पर होता है ऑन द ABV वैल्यूज़, उसके ऊपर ये बीफ ऑन डेयरी जो है वो यूज़ करते हैं, बीफ सीमन, सो टू डेवलप पैरेलल बीफ ब्रीड लाइक फॉर द मीट पर्पसेस। सो इसके ऊपर भी इनकी वर्किंग है, वेरी वेल मैनेज्ड। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हियर, लाइक ऑल green, bit of shortage in the feed here, तो कुछ feed के मसाइल हैं due to the rain इधर इतनी ज़्यादा नहीं हुई इस साल, तो इस वजह से ग्रास ने उस तरह ग्रो नहीं किया, बट स्टिल हेफर्स आर रियली इन गुड कंडीशन। हम इंशाल्लाह इनमें से जो अपनी सिलेक्टेड होंगी हमारे पास, वो हम लेके जा रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, और उधर जाके हम इनके ऊपर AI प्रोग्राम करेंगे। सो सैंड्रा, द बुल्स यू आर यूजिंग टू ब्रेड योर कैटल, मेनली you select them on the high BPI values or any particular I don't focus traits on. you look at before choosing a bull? Yeah, we do. So every year we'll walk through the cattle and look at the specific things that we would like to focus on and improve. So the things that we've consistently wanted to focus on is in their conformation, of course, is their udders and teat placement, body depth. We always choose A2, A2 bulls, like I was saying. We need outcross bulls, of course, as well as, rather than large milk production, I like to focus on positive components and that nice sort of good spring in their ribs. So, you know, if you've got a bull, if you're choosing bulls that are going to give you positive components and the structure of the animal or the conformation of the animal is going to be there, you don't worry about the milk production because it will come. Yeah. As long as they've got the capacity to eat and they're going to produce good components, they're the important things that you want. And good feet and legs, you know, in our farming ways here, we walk our cattle a little way sometimes, like the furthest paddock for us, for our cows to walk is probably 1 kilometre away. In winter it can get wet, so they need good feet and legs. So that's, you know, I guess the main things we focus on really. So Yeah. फार्मर जिस तरह सैंड्रा बता रही है हमें कि ये ज़्यादा फोकस उसके ऊपर नहीं करते जब ये बुल सिलेक्शन करते हैं अपनी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो इनका मेन एक तो क्राइटेरिया ये है कि बुल A2 हो, दूसरा ये कि इट गॉट अ गुड कंफर्मेशन, लाइक गुड अडर attachment, good teat placement, the right spot, body depth, and the capacity of the cattle they really look at. So उस टाइप का बुल ये जो है वो मेनली फोकस करते हैं रादर दैन गोइंग ऑन टू द प्रोडक्शन, क्योंकि इनके मुताबिक प्रोडक्शन को ना कम एनीवे, क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी है, शी कैन ईट वेल, सो दैट्स द मेन की। उसके बाद फीट एंड लेग्स, दैट्स देयर अदर प्रायोरिटी के फीट एंड लेग अच्छा होगा कैटल का, तो वो वॉक कर सकती है पैडिक से अप टू द डेयरी। सो ये बेसिकली इनके जो मेनली फोकस ट्रेड्स हैं जिससे ये वो अपने बुल सेलेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी कैटल को जो ब्रीड करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं करते कि उसका वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बट दे आर मेनली इनटू के कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, लाइक हाउ मच फैट दे आर गेटिंग, हाउ मच प्रोटीन दे आर गेटिंग। सो दो सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स दे रियली वर्क ऑन, क्योंकि दैट्स really create the profit for the dairy. So ये इनका breeding plan और program है. We are really thankful to Sandra for giving us time today.
and we really appreciate that. Of course, once the genomics are out, we will come back again here to filter out the cattle from your herd.